वेलकम टू द कैड वर्ल्ड। आज हम एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट की हेल्प से एक फिगर बनाने जा रहे हैं जो कि हमें कैड ब्लूप्रिंट से मिला था। तो आइए देखते हैं। ये हमारा बेसिक फिगर है जिसमें डायमेंशन प्रोवाइड की गई हैं। हम देख सकते हैं कि टॉप से देखें तो 50 बाय 100 का एक ब्लॉक दिखता है और ये टोटल फिगर जो है उसमें चलिए हम बनाते हैं। प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन, स्केच, रेक्टेंगल, ड्रॉ, डायमेंशन 50 mm, 100 mm, press OK. Features: extrude boss base, extrude up to 30 mm. Press OK. Now select sketch, smart dimension 10, 20, both are same, 20 by 10. OK. Features: extrude cut, now blind through all. Press OK. Now partial figure is ready. Go to top, extrude cut, select rectangle and draw. Small dimension 40 by 30. Now here to here it's 30 mm and this is 10 mm wide. Click OK. Now go to feature, extrude cut, extrude up to 10 mm. Extrude cut, sketch, rectangle, small dimension 20 by 30. This dimension is 10 mm. Press OK. Now go to feature, extrude cut, cut through all. Rectangle, sketch, circle. Now it's time to create hole. Select all 4 circles, make relation equal. Press OK. Small dimension
Now hole is 10 mm diameter. From here to here it's 30 mm. This is 10 mm. Same, this is 30 mm and this dimension is 10 mm. Go to feature, extrude, cut it through all. Now figure is ready. Subscribe for more videos on Solidworks. Thanks for watching.